Hello, bachcho. Let's see the question. Here, the question is saying that the ribosomes, in case of ribosomes, the letter S signifies what? Okay, so whenever we talk about the ribosome, so in that we basically use the letter S. So, what basically it signifies? So, here four options are given to us. Option A is sedimentation coefficient, Svedberg constant, both A and B, and option D is none of the above. Fine. So, if we talk about the key concept that we have used in this question, that we have to use in this question is the S. The S signifies what? So, the answer will be the Svedberg constant. So, here the whole question is based on Svedberg constant. Now, if we talk about the ribosomes, it could be seen either in case of eukaryotes. So we can find the ribosome in the eukaryotes also and in case of prokaryotes also. In case of eukaryotes, we have 80S structure of ribosome, and in case of prokaryotes, we have 70S structure of the prokaryotes. Now, in this, we have to say what does this S letter signifies or denotes. Fine. Now, अगर हम बात करें the size of the ribosome, तो राइबोसोम की जो साइज है वो किस पे डिटरमाइन होती है? दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. तो ये इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द sedimentation coefficient. So it is based on the sedimentation coefficient in the centrifuge. अगर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज करें तो उसमें अगर हम राइबोसोम्स को डालें, हमें मालूम है राइबोसोम में दो यूनिट्स होते हैं, द लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट. ओके, नाउ अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये दोनों जो यूनिट्स है या ये दोनों जो बैंड्स है वो दोनों डिफरेंशिएट होंगे, सेपरेट होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. नाउ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली गिव्स हाउ फास्ट the molecules move in the centrifuge. Okay, so it basically denotes how fast the molecules move in the centrifuge. That is basically given by sedimentation coefficient. क्योंकि अगर हम बात करें 80s में, इसमें दो होते हैं सब यूनिट, जो लार्जर होगा वो है 60s और जो स्मॉलर होगा दैट विल बी 40s. फाइन. अगर हम बात करें स्वेडबर्ग की, ओके, तो स्वेडबर्ग ने क्या बोला था? स्वेडबर्ग बेसिकली differentiate between these ribosomes. Okay, so according to Svedberg constant हम राइबोसोम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं. ओके, और ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस. Okay, and it basically represent how the components will get separated depending on their size and the sedimentation rate. तो यहाँ पे किस बेसिस पे वो डिफरेंशिएट होंगे? डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, शेप एंड द सेडिमेंटेशन रेट. फाइन. तो ये जो फैक्टर्स है ये बेसिकली गवर्न करेंगे इन separating the different subunits of the ribosome. So from this we can conclude what? We can conclude that the S letter in the ribosome basically denotes the Svedberg constant, or we can say the sedimentation coefficient, because ये दोनों जो terms है ये दोनों same है and they are basically governing the size of the ribosome. That's why अगर बात करें करेक्ट आंसर की, तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. मीन्स both the sedimentation coefficient and Svedberg constant will basically signify the letter S in the ribosome. So here we can say that the final answer for this question, if we talk about the final answer for the question, then it will be option C. Hope you understood it well. Best of luck.